Good evening. Thank you very much for being part of the Aagaaz Theatre Trust fundraiser. The idea is to have a little bit of fun, but the idea also is to make this time mean something. First of all, I'd like to thank you so much for sparing the time and giving us that time. Today, of course, there's lots of activities planned for you. There's lots of action planned for you. But before that, some important things I'm going to read out of the paper because we need you to focus and listen because listening is such a privilege nowadays, isn't it? So here it is. What is Aagaaz? First, Aagaaz is a community of educators and art practitioners committed to examining and questioning what is to inquire what could be. Aagaaz practices theatre and arts for social action to bridge gaps in learning, understanding the other, access and dignity. They create spaces to engage with children and young adults across social and geographical boundaries to discover ways of acting with its dual meaning of performing on stage and taking action for self and society. At the core of the work is Aagaaz's repertory, composed of 11 young actors from Hazrat Nizamuddin Basti who are arts practitioners, theatre makers and facilitators. This year, Aagaaz plans to extend their work to 1,400 children in Nizamuddin as well as KHIRKEE village, taking work to schools in these communities and creating spaces to engage with arts-based workshops and performances and raise questions and initiate democratic dialogue. To raise funds for this work to sustain, a whole community of artists has come together to put this evening together. And I'm here to link all of this. How do you help? That's important. We are aiming to raise 40 lakh rupees by the 22nd of April. You can contribute through the Give India fundraiser. I'm going to repeat that, the Give India fundraiser. Or you could head to Razorpay and see how you can help. And of course, you can attend our workshops and performances that will be going on throughout this month. The details of the artworks, of course, there's art created by Shiraz of the Khwab Karma Collective, Arya Sinha and Yashas Chandra, based on Aagaaz's 4 productions over the past 7 years. The work will be on display at KHULI KHIRKEE on the 16th and 17th, and of course on our social media pages. That's what it says on the paper. What it doesn't say, of course, is the beating heart of all the work that we put in so that you have a great evening and also for the evening to mean something so that you can help those who cannot help themselves really to discover, to make a choice, to actually just appreciate art in a very democratic, dialogue-based way. So, ladies and gentlemen, beginning the evening is a set of people who will show you exactly how beautiful a marriage of raw emotion and the elegance of simplicity can be. The Aahvaan Project is steeped in Sufi tradition. They have the words of Kabir, the words of Lale to look at, but also there's the beautiful nuance of music and of course the raw power that these words can carry. So ladies and gentlemen, beginning the Aagaaz fundraiser with the Aahvaan Project. तो बहुत बहुत शुक्रिया आगाज़ के फंड रेज़र का हिस्सा बनने के लिए। कोई मुझसे पूछे कि आगाज़ क्या है तो मैं कहूँ जेठ की गर्म रात में जुगनुओं से टिमटिमाती आँखें, अक्टूबर की रात की गुदगुदा देने वाली हवा और एक निहायत बेकार दिन के बाद साथी का सिरहना। आगाज़ से मेरी मुलाकात कुछ ही समय पहले हुई और मैंने देखा एक संगठन उन प्यार के सिद्धांतों पर चलता जिन सिद्धांतों पर कहने वालों की तो कोई कमी नहीं है, पर चलने वाले चंद हैं। तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाने में कुछ समय तो लगता है, पर वो घोंसला न जाने कितने नन्हे पंछियों को उड़ान के लिए तैयार करता है। आगाज़ क्या है? वही घोंसला, और ये सब इस घोंसले के बाशिंदे।
है दूर उजाला, फहरिस्त है लेकिन ना सुनने वाला, रफ्तार है धीमी, है दूर उजाला, शिकवे है लेकिन ना सुनने वाला, दिल हार न बदले, तेरा वक्त आएगा, संघर्ष हमारा फिर रंग लाएगा, लाएगा संग्राम, दुनिया बदलेगी, मेरा भी है राम, मैं वापस ले लूंगी, रफ्तार है धीमी, है दूर उजाला, शिकवे है लेकिन ना सुनने वाला, इस आसमान पे हम सबका हक है, वो रोके तो क्या, यहाँ पंख बहुत है, चलना है अब साथ के, दुनिया बदलेगी, चाहे जो हो, दाम दिया है पहले भी, रफ्तार है धीमी, है दूर उजाला, शिकवे है लेकिन ना सुनने वाला, रफ्तार है धीमी, है दूर उजाला, शिकवे है लेकिन ना सुनने वाला, रफ्तार है धीमी, है दूर उजाला, शिकवे है लेकिन ना सुनने वाला, रफ्तार है धीमी। सात साल, पसीना, परिश्रम, और आज आगाज एक भरा पूरा परिवार है, बिल्कुल गांव के उस वृक्ष की तरह जो फलों से लदा झुककर नन्हे बच्चों से हाथ मिलाता है। गांव भर के बच्चे उस पर टंगे दिन भर खेलते, सीखते, गिरते, फिर उठते हैं। वो वृक्ष बढ़ता चलता है, सीमेंट की बेजान परत को चीरता, खुश्क हवाओं को झेलता खड़ा रहता है, यात्रियों की छांव बनकर हमेशा।
इठले धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो मन धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो अपना रास्ता देख लिया जब खुद से चलना सीख लिया मन धीर धरो तुम धीर धरो काहे सकुचाए मन इठले धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो मन धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो काहे की रस्सा खींची है काहे की मुठभेड़ अपना रास्ता आप बनाए हार जीत का फेर क्यों हार जीत का फेर मन धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो मन धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो सबका भला पूछता चल पर अपना भला न भाए जग बोराए संग संग फिर कब भी तब दोहराए मन है पुजारी तन मंदिर सा तन है पुजारी मन मंदिर सा एक जाए दूजा जाए एक जाए दूजा जाए काहे सकुचाए मन इठले धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो मन धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो मन धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो मन धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो ये घर ये परिवार बिल्कुल एक नदी सा है बहता हुआ सबको साथ लिए If you're here, you're truly here. You learn every step of the way. Like the river flowing, spreading its calm, its cool as it moves forward, bringing people together for the thirst of love, of knowledge, of kindness. और ये हमारा आह्वान आपको to be part of this river, to flow with him. गगन में जड़ी लगी पीले अमीर से धारा गगन में जड़ी लगी पीले अमीर से धारा गगन में जड़ी लगी
लगी हाँ जड़ी लगी, पीले अमीर रसधारा गगन में जड़ी लगी, पीले अमीर रसधारा गगन में जड़ी लगी। बूंद का प्यासा घड़ा भर पाया, सपने में वो स्वाद न आया। बूंद का प्यासा घड़ा भर पाया, सपने में वो स्वाद न आया। कहो किसे कैसे समझाएं, कहो किसे कैसे समझाएं। बूंद की तरन लगी, पीले अमीर रसधारा गगन में जड़ी 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 लगी। प्यास बिना क्या पिएगा पानी, प्यास के लिए है वो पानी। प्यास बिना क्या पिएगा पानी, प्यास के लिए है वो पानी। बिना अधिकार कोई नहीं जानी, बिना अधिकार कोई नहीं जानी। अमृत रस की जड़ें लगी, पीले अमीर रसधारा गगन में जड़ी 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 लगी। अमीर रस पीवे अमर पट पावे, बहु योनि में कबहू न आवे। अमीर रस पीवे अमर पट पावे, बहु योनि में कबहू न आवे। जन्म मरण का दुख नहीं साधे, जन्म मरण का दुख नहीं साधे। घटी गगरिया भरण लगी, पीले अमीर रसधारा गगन में जड़ी 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 लगी, अमीर रसधारा गगन में जड़ी लगी, पीले अमीर रसधारा गगन में जड़ी लगी। पर हर घोंसले, हर पेड़, हर नदी को जरूरत होती है साथ। कहते हैं किसी भी बच्चे को पलने बढ़ने परवरिश करने के लिए एक पूरे गांव, एक पूरे हुजूम की जरूरत पड़ती है। And it's time to help this beautiful family grow, to flow freely, to become all that it can,
and to play our part in this tribe. पथिक जो चलना सीख लिया है, पथिक जो चलना सीख लिया है, गाए अब तू रो, हौले पाँव बढ़ाता चल तू, कठिन बलापत हो। अरे चल मुसाफिर हौले हौले बढ़ मुसाफिर हौले, अरे चल मुसाफिर हौले हौले बढ़ मुसाफिर हौले, अरे चल मुसाफिर हौले हौले बढ़ मुसाफिर हौले, अरे चल मुसाफिर हौले हौले बढ़ मुसाफिर हौले। राह में रोड़ी राह में बजड़ी, राह में रोड़ी राह में बजड़ी, राह में कंकड़ कांटे, राह सरल हो जाएगी यदि सुकई तू बांटे। अरे चल मुसाफिर हौले हौले बढ़ मुसाफिर हौले, अरे चल मुसाफिर हौले हौले बढ़ मुसाफिर हौले, अरे चल मुसाफिर हौले हौले बढ़ मुसाफिर हौले, अरे चल मुसाफिर हौले हौले बढ़ मुसाफिर हौले। प्रीत भाई जबरीन से गाड़ी आगे ठे, गगन में तर हो जाएगा छोड़ जगत के घेर। अरे चल मुसाफिर हौले हौले बढ़ मुसाफिर हौले, अरे चल मुसाफिर हौले हौले बढ़ मुसाफिर हौले, अरे चल मुसाफिर हौले हौले बढ़ मुसाफिर हौले, अरे चल मुसाफिर हौले हौले बढ़ मुसाफिर हौले। अरे चल मुसाफिर हौले हौले बढ़ मुसाफिर हौले, अरे चल मुसाफिर हौले हौले बढ़ मुसाफिर हौले, अरे चल मुसाफिर हौले हौले बढ़ मुसाफिर हौले, अरे चल मुसाफिर हौले अरे बढ़ मुसाफिर हौले, जरा चल मुसाफिर हौले जरा बढ़ मुसाफिर हौले। हौले हौले चलते हुए आगाज को कईयों ने यहाँ से यहाँ तक जाते हुए देखा है, तो आज let's come together, support them and help this beautiful journey, this beautiful family move forward with love always.
Aahvaan Project, ladies and gentlemen, bringing the raw power of Sufism with the elegance of simplicity. It's just so beautiful when they walk hand in hand. And of course, the voice behind the words, of course, Vedi. It's been absolutely wonderful listening to Aahvaan. I've been listening to it for a while now, and every time it's just like a punch in the gut with a velvet glove because the words are so powerful and yet the nuance of music is so beautiful. What made you choose what you chose for the Aagaaz fundraiser? I think, like the narrative went, since I've known Aagaaz, it's been inspiring in a whole different way. Of course, we break down. Of course, ऐसा समय आता है जब हम सब कभी न कभी हिम्मत हारते हैं, टूटते हैं, रुकते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. But something that keeps you going is hope and love, and you just keep moving. And so the songs that we shared today are the songs that come as a reflection time and again for us. And they are songs that give me the strength to keep moving. And so I felt like this is probably the best space to share these songs because I see a beautiful community of family that keeps on growing, keeps on moving. That's important, isn't it? To show them the way, as you just sang, Chal Musafir Wale Wale. It is important to give time to art. Art makes everything better. And self. That's so important. Absolutely, absolutely. But in these times when words have increasingly become weaponized, I think it's important to say those words out a little more beautifully and more importantly, a little more love. Absolutely. I think one, conversations are important, but we've said this for a long time. The biggest, most important thing is to be able to give each other space. That's what conversations don't do anymore. And that's why spaces like these become so much more important. Absolutely. I think because they give us a luxury to listen. Because listening is becoming a bit of a privilege, and it's been an absolute privilege listening to the Aahvaan Project do what they've done. It's absolutely beautiful. Sumant, Anirban, Vedi, and Maki who you just saw performing these wonderful, wonderful songs. I hope you heard because listening, as I said, is a privilege, and for you to have given us that privilege is wonderful. And remember, this is the Aagaaz fundraiser. We were trying to raise 40 lakhs by the 22nd of April, so that those without the means can know what creative spaces are, can know what thinking independently can mean, especially in the arts. So please help out. You can of course go to the Give India fundraiser, or you could log on to Razorpay and help with whatever it is that you can, because it's only the drops that make the ocean, right? So please contribute. That would be nice. Thank you very much, Vedi, for that. It's been absolutely wonderful. Remember, on the 16th, there's Shut Up and Dance right here at KHULI, and what you need to do is log on to any of the Aagaaz Theatre Trust handles, and you'll find the link where you can buy the tickets. There's 2 surprise acts as well, so you might want to be a little interested in that. What's up next? It's Duniya Sabki. Duniya Sabki is inspired by a name that's become synonymous with the courage of conviction and the importance of asking questions. Sardar Hashmi. Duniya Sabki is inspired by Sardar Hashmi's poem by the same name, and it deals with the issues of entitlement, as we were talking about. Questions. We need to ask more questions, do we not? Because there are really no wrong questions there, probably just a few wrong answers. So this play asks questions that are intensely relevant to the current scenario. Who does the word belong to? Who should the word belong to? Who occupies more space? Who has a louder voice? Through vignettes of the lived experiences of the members of the repertory, this piece has been devised to provoke answers to these questions. Prahlad Tiwari's beautiful rendition of Kabir's Matkar Maya Ka Ahankar, Dushyant's Song Mein 70 Aadmi, and the popular Kaha To Lag Jaye Dhak Se breathe new life into this narrative. So, ladies and gentlemen, we'd like you to check this one out. It's called Duniya Sabki.
That's the wonderful artwork for Dunya Sabki, ladies and gentlemen. And next up, a musical interlude. This young musician, producer, composer has really pushed the envelope so far. It's almost falling off the table, but the music that he brings to the table is absolutely phenomenal. He works on music for films, podcasts, ads, his Twin Cats sound. His influences, of course, range from Radiohead to St. Vincent, but his voice is just so uniquely his own. Don't take my word for it. Listen to Amartya Ghosh bring his music to the Aagaaz fundraiser, ladies and gentlemen. This is Amartya Ghosh. Today to day, the carnival explodes upon whoever cares to go. Like drunks around the watering hole, they gather round. They wanna see a show. And I live in my disguise, throw bottles at the skies. It creeps right through my eyes. It won't show. Oh, the children gather round the man with cotton candy in his hand. See them go. The lovers wander hand in hand. Each boy will try and be a man, and so I live in my disguise, throw bottles at the skies. It creeps right through my eyes. They won't know. Oh, the bearded man will walk the line. He'll slip and fumble. He'll be fine. Take it slow. The masks and fairies wine and dine. The bard and jester confess their crimes, feeling low.
I've seen 100 lives fly up and drop like flies and never realize it's all a show. Oh, I'm the sad one. All the pretty girls take pity on me. They talk of all the pretty boys with a few more charms than me. And they come over as I serenade. They leave for boys with pedigree. And they tell me it's over now. Get over it. Inform me the verdict's out on your insanity. You're the mean one. You build me a house that got swallowed by the sea. And all our pictures, they floated in the ocean like fading memories. Keep showing the artwork first.
So you saw a little bit of behind the scenes. That's okay, isn't it? It's a fundraiser, it's live. Now you can't doubt us that it's live. Because it's the mistakes that make us human, right? Laugh about it and move on, which is what we do. Aahvaan, of course, is the gentleman behind the technology, which of course is making him cry buckets of tears because we just had a technological glitch. There was, Uncle Murphy is a great invitee to a party that he's not invited at. What happens, of course, is that whenever things need to go wrong, they win, especially in life. And that's what happened with Amartya's performance. We'll come back to it, of course. But right now, we have the wonderful Alia and Yash. Thank you very much for joining us. If you're wondering, who are they? They're the people behind the beautiful artworks that we'll be showing you. We have shown you one already, which is called Duniya Sabki. There's also this artwork for Ravanaya, which is, of course, a play about Ravan's inevitable arrival as the background. The play disintegrates to expose the Ravan within. The play explores the idea of the illusion of a will to create systematic hierarchical divisions in the ranks. It asks a very strong question, as they told you. Questions are extremely important to us, and this one asks a very important question. Is Ravan the real threat, or is it the system of never-ending flattery and attempts to keep on creating chaos in order to maintain the prevalent disorder in society? Set in the midst of wartime negotiations and skirmishes, Ravanaya presents us with an intriguing proposition, one that allows the audience to lift the veil and peek behind the power structures that make and unmake, of course, a society. Borrowing signifiers from the Ramayana, this production is an adaptation of Shukmare's Lokane Shaktishan, which is rendered in contemporary Hindi, and of course all that verbiage into non-verbal communication with the artwork, which is what Alia and Yash did. Tell us, how did that happen? What was the thought behind creating the artwork? We need to use words because this is a little more than art. So we were working with images from all 4 days, and some of them happened years ago. But with our, it was a very collaborative process. I should say that right off the bat. I'm still not sure how it happened or what happened when we should. Sure. Because we were both taking different things from original images. And did you guys sit together, watch the play, and then decide on what the images were? What was the process, considering that we were at a very restricted time these last 2 years? We'd only seen a couple of the plays between us, but just speaking to Sam and other people in Aagaaz, just tried to get our work to speak to some of the broader themes of the play, rather than something very directly, like something that we would have seen on the stage, but rather just evoke the same kind of themes that the play speaks. And those themes are important, aren't they? Because these are themes that are very, very relevant, even though these works were written earlier, at an earlier time, especially Sundar Nashi's poem for that matter. Art is increasingly being seen as a luxury, though we all know that in the end, it just makes life so much easier to bear. It's a pure necessity. What are your views on, do you think that in the scenario we're living in right now, the thought processes are getting a little restricted as far as self-expression or expression in art is concerned? I feel like there's been a democratization of technology to the extent that increasingly people are finding ways to create art, but it's not necessarily understood as art from a sort of cultural high perspective. This division of what is good art and what is TikTok. Why isn't TikTok good art? Sure, absolutely. It's TikTok. So I do think that there's just more means to make it, but probably less time. Yeah, time. That's another luxury we don't seem to be at. Yeah, sure, your thoughts. I'd like to think that rather than restricting one's thought processes, the times that we live in are kind of making us find new ways to express those thoughts without, in maybe more subtle kind of ways that aren't
hitting anyone over the head, but I feel like we're trying to find new ways to see the things that we feel are important. But you're confident that subtlety has space right now in the scenario that we have of the receptivity of art. Do you think subtlety has space? Yes. She's nodding her head emphatically. I do think so. I mean, depending on the medium, of course, the medium needn't be so subtle, but I think the artwork certainly can be a little quiet. And maybe that's what gets things interesting from there. Because we are being bombarded by industry all the time. So, there's of course the practice of art, and then there's also, a lot of people talk about the responsibility of art, especially in times when art needs to provide solace. Do you believe in that? In the fact that there is a responsibility that art also has? I don't think art is necessarily separable from what is happening, because those processes are constantly playing out. Like what you're seeing in, say, the social and political situation is feeding into the art, or it's sort of drawing from it. It's trying to, wrestle with it at all times. So I don't think anyone is ever really disconnected from anything else. Yeah, I agree with what Alia said. I think art has as much of a responsibility as anyone else doing anything else does to respond to. I'm sure you will also agree that one of the key responsibilities of art is to give us perspective, which is so important in today's day and age. And that is why art and its the exposure to art to young minds is so important, which is what this Aagaaz fundraiser is trying to raise 40 lakhs by the 22nd of April, so that more young children can be exposed to the beauty of art and can be encouraged to hold democratic dialogue. So if you want to help, all you need to do is either log on to Give India fundraiser or just log on to Razorpay. Every drop in this ocean is precious, and that's what we want to tell you. And while you go and explore that, I'm going to ask Aahvaan, what's next? Is it playground? Yes, it is playground. Fantastic. We're playing it by the ear right now because of a few technical glitches, so I'm sure you'll play along, won't you? Because next up is the Playground Collective, completely improv. This is actually the sort of the personification of living in the moment. There is nothing prepared. They'll come in, they take cues from people around, and they do what they do. The Playground Collective is ready. Yes, they're ready. Now we are going to make our exit, and Playground's going to make their entry. If you see empty stage, that's just preparation for Playground Collective. Stay with us. We're live? Yeah. You're live. Hi everyone. Hi audience who's watching us on YouTube, and hi everyone in the room. Hi. So the fact is here. Offline audience here. Hi. Yeah. These guys are not on stage yet, so it's okay. Alright. We are Playground Improv, and we do improvisational theater and comedy. Basically, what we'll do today is we'll try and come up with some theatrical scenes and hope that it turns out to be comedy. So that by the end of the show, we call it comedy. And all of the stuff that you will see today will be based on your suggestions. We'll take some words, some suggestions of different kind from you, and build scenes on the spot. Right? So whatever you will see right now will be made on the spot. Right? Will we be seeing suggestions online also? On comments? You will tell us. All right. Great. So without wasting time,
what I'll do is first let me introduce our team to you. All right, everybody, please be on stage. All right, give them a big round of applause. Now, to make you understand, we'll do an open scene and try to figure it out for everyone what is going to happen and then move forward into our main show. What we'll do is we'll keep two of you on stage and everybody else can move to the wings. If you want chairs, you can take two chairs. Alright, so Pranchu and Pallav are here. What I want is I want some suggestions of, let's say, what is their relationship? There are two characters on stage. Give me a suggestion for a relationship. A relationship between two people. Brothers. Brothers. Two brothers. What else? Anything else? Dushman. Dushman. Colleagues, ex-boyfriends of the same girl. Ex-boyfriends of the same girl. Alright. Okay, let's go with that. Ex-boyfriend. Ex-boyfriend of the same girl who are also brothers. Let's go with that. Alright, two brothers who are ex-boyfriends of the same lover, same girl. Alright? That. Right now, where are these brothers? Give me a certain kind of location. In the hills. Huh? In the hills. In the hills. In the hills. Alright. What is this building or what is this particular location in the hills? Colonial bungalow in the hills. It's a colonial bungalow in the hills. Alright. 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 It's a colonial bungalow in the hills, right? It's something that British left for you, right? Two brothers. Same ex-girlfriend. Right? That's your selection. Right? You can exit to the wings. You can exit. You can enter when I say. Now let's just name an object, or give us an object if there is something in the room. Gun. 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 What else? Let's go with a gun. All right. So there's a gun. People. Oh, we've selected a gun for now. Okay. All right. So gun, brothers, same ex-girlfriend, colonial bungalow. This is what they have. Let's see what they create out of this. You guys ready? Yeah. All right, 3, 2, 1, and improv. चाय नहीं चाय तुमको बोला परसों सुबह आया था चीनी कम तुम दम गई हो ये फेंक के दोबारा बना दो सिगरेट दो ऐसे ही लूंगा बना दो रीना को पता है तुम आए हो यहाँ पे उसको भी पता होना चाहिए मैं अपने अकेले पन को एंजॉय करना है अकेले को एंजॉय करने रीना के घर में आए हो और कहीं की चाबी नहीं थी मेरे पास मेरा रिलेशनशिप ऐसा था हम लोग बहुत सारा क्लोज थे उसने मेरे को चाबी दे रखी थी क्या अजीब से भूत बंगले की और अभी भी डुप्लीकेट चाबी है ये ओरिजिनल है तुम्हारी वाली डुप्लीकेट है मेरी तो वापस ले ली ना उसने मैं बिना चीनी चाय चाय पत्ती कितनी डाली 2 चम्मच 2 ही डाली मैंने गिरे 3 थे वो नहीं ये भी एक दो चाबी मत दे दो मुझे मैं चाय बनाऊं चाबी तो नहीं हो पाएगा
सुनो तुम जो चाहिए मुझसे लो अभी। नहीं वो रीना के पास ही है। अभी देखा मैंने तुम्हारा जेब में चाबी है यार। नहीं जो मुझे चाहिए वो रीना के पास है। देखो बॉस मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ। Please, मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ. Just remember that. Let me add something to this scene. Alright. In the middle of the scene, they'll continue and they'll raise their hands. They'll pause and raise their hands. Just show them an example. Like this. Whenever they raise their hands, we want someone from the room over here just to give them a cue of a word, a single word, a random word every time they raise their hand. Anyone? Body. Yeah, अभी नहीं. जब हाथ रेज करेंगे. Okay. 1 and 2. Alright. So whenever Pranchu raises his hand, you, and whenever Pallav raises his hand, you have to give them one word, a random word every time, right? And name a profession, any profession. Carpenter. A porn film director. A porn film director. Alright. Why don't you pick one of these two? Carpenter. A porn film director. Alright. A porn film director. The profession of the character who will enter in this scene will be a porn film director, and these two characters will raise their hands, right? What was the last thing you said? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ. Raise your hand. Raise your hand. मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ. Give me a word for him. Yeah. Kodrochi. We have selected people who are giving words, so that's okay. Next game. So अंगूठी. मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ. अंगूठी. 3, 2, 1. Continue. अंगूठी का काम करो। रीना की छोटी बहन। मेरा ना एक्चुअली मैं किसी को बताना मत पर मैं असली ना अंगूठी से प्यार करता हूँ। पर रीना की मम्मी ने कहा है कि जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती तो अंगूठी की शादी नहीं हो सकती। तो कुछ क्या हम किसी तरीके से कुछ चप्पल. मतलब चप्पलें एक्सचेंज कर सकते हैं। Metaphorically speaking, but can we come to an arrangement? उससे पहले एक आइडिया एक्सचेंज करना चाहूँगा। मैं आप दोनों को देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अगली फिल्म में हो सकता है आपके साथ। ये सबके पास डुप्लीकेट चाबी है सर। मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। अच्छा हाँ भैया ये एक बॉयफ्रेंड है. मैं इससे पहले वाला एक बॉयफ्रेंड हूँ. मैं करेंगे। So मेरा मुझे बताया था घर में भेजे गए दो लोग काम धाम में उनके पास तो आई थॉट कि एक्सपेरिमेंटल फिल्म आप लोगों के साथ बना सकते। मेरा तो ठीक है. इसको कैसे लोगे? बट काम आप क्या करते हैं? मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। मेरी नजरों में आपको देख लिया और मीना की नजरों में आपको काफी करीबी से देखा हुआ है। ठीक है तो बताओ क्या करना है मतलब आगे हम कर सकते हैं पर हलवा पूरी खा के रेडी हो जाओ. आज सुबह से मैं खाता रह रहा हूँ कि मेरे को काम दे दे बस. चलो ठीक है मैं सीन डिवाइस करता हूँ आप हलवा पूरी लाओ मेरे लिए. किचन इसका है. आप हलवा पूरी लाओ मेरे लिए. यार मैं ही क्यों बना रहा हूँ सबके लिए यार यही बोला था रीना ने कुछ नहीं होता है. अब मैं से मेरे को कैसे करना है? हलवा पूरी तो मैक्स चाय अंडे आते हैं ओके मैं आपके लिए ना पोछा. पोछा लगा सकता हूँ क्लीन कर देता हूँ वैसे क्लीन कर देता हूँ आपका देखो यार बहुत गंदगी होने वाली है तो मैं अभी आप क्लीन कर दो है ना मैं क्लीन कर देता हूँ और सर आपको और कुछ पॉटी अगर आ रही है तो आप जान लो मैंने टॉयलेट साफ किया मैंने टॉयलेट साफ किया क्लीन कर दरवाजा भी यूज कर सकते हैं ये चाय नहीं आ रही है. पोछा चूक गई है यार ये बना ले यार Ding dong. ये मेरा घर है. नहीं ये रीना का घर है एक्चुअली रीना के पापा का रीना के पापा को कोई किसी ने दिया था उनका है इसका प्रॉपर्टी का काम. मैं वही हूँ. Alright, this was to give you an idea what you are going to see and how we are going to make stuff up according to your suggestions. Alright, what we'll do is let's have all of you on stage and divide into 2 groups. Right, we'll play this game called Rooms.
right? Our show will be divided into different small games and small stories. These are all rooms. All right. Let's have this as the division. Yeah. One chair there, one chair there. All right. Name a building which has multiple rooms. Hospital. Hospital. Let's go with the hospital. All right. Name. We didn't get the objects in the previous one, so we'll keep gun in this room, and we'll keep one more object. Chopsticks. 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 Now, what are the two rooms inside the hospital? Operation theater. But it was not a quiz. So it's okay. But we'll go with it. Operation theater. All right. First prize. For the second prize, Dean's office. More. Yes. This More. room. Dean's office. More. Mall. More. Mall. Dean's office. All right. Somebody has to choose for me. Pick one. More. Mall. So it's a mall, and this is the operation here. Chopsticks and gun. Right? These are two different rooms inside the same hospital. Right? We call this room number 1, and we'll call this room number 2. Now, we'll start with this room, freeze the scene, and we'll switch to this room and freeze them and vice versa. At one time, only one room can play. Is everyone? Can you see both the rooms? Oh, everywhere? Great. So when I freeze this room and switch, whatever the last line, word, sound, anything will be of this room will be the first word of this room. Simple? Alright, great. So let's start with this room and Operation Theatre, Chopsticks, 3, 2, 1, go. कब से लेटा रखा है यहाँ पे? ओ भाई साहब, आपका वॉइस को भी चल रहा है क्या अभी? हेलो हाँ जी ठीक कर दिया हाँ नहीं उनकी ऑक्सीजन अभी नहीं हटानी आप हो ना नहीं तुमको उसको नहीं काटना ऑक्सीजन की जरूरत है अभी हाँ उनको देते रहो फ्री उनको देते रहो स्विच रूम नंबर 2 कैसी है मगर तो कोई बात नहीं वेंटिलेशन तो रखो है इस रूम में इतनी घुटन है डेड बॉडी में नाक का रखा है तूने कुछ घुमा दिया तो बस क्या है सुन मेरी ना अपग्रेड की क्लास डॉक्टर बनना है मुझे ये सर्विस बनना है जब तू जाएगा तो मेरे को यार रिकमेंड कर देगा बहुत कोशिश है देखो ये तो कोर्स कर रहा था तो मैं वैसे नेचुरली बन जाता था मेरे को दोबारा से बनना है मैडम बॉडी से क्वालिटी बताओ ये कैसे बनोगे रिसेप्शनिस्ट जो आएगा मैं बोलूंगा इधर चले जाओ फ्री इधर चले जाओ स्विच रूम नंबर 1 हाँ इधर चले जाओ ये चल जाओ करो ना एक सेकंड रुकना है एक सेकंड आप इतना क्यों कर रहे हो क्या हुआ भाई साहब मैंने ना बहुत ज्यादा चूमी खा ली और मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं निकाल देता हूँ ना अभी आप एक काम करो ठीक है सीधे हो जाओ पैर सीधे कर लो आप एक कपड़ा काटते हैं ये बस आप अपना ऑपरेशन देखना चाहते हो वैसे घूमना चाहते हो आईसीसी हो जाए तो मजा आ जाएगा बाद में देखोगे अभी देखोगे रिकॉर्डिंग देखो रिकॉर्डिंग देख लोगे ना रिकॉर्डिंग देख लोगे स्विच रूम नंबर 2 रिकॉर्डिंग देखोगे ऐसे नहीं ऐसे पोस्टमार्टम वगैरह तो नहीं होगा नहीं रिसेप्शन का क्या पोस्टमार्टम सीधा उसको देखो लंच टाइम आप देखो कितना लंच करते हैं हाँ ये देखा कैसे पागल बनाए वैसे ही पागल बनाए 300 में 3000 बोले क्या बोले 300 पे 3000 फ्री 300 के 3000 स्विच रूम नंबर 1
300 में 3000 मिल रहे हैं, उठ जा 3000? हाँ 3000 मेरे को पता है था ढोंग कर रहा है बेहोश होने का। अभी एनेस्थीसिया ऑन नहीं किया तो मास्क लगाते ही एक्टिव हो गया तुम। हाँ वैसा कोशिश चल रही है। एक्टिव हाँ देखो तू एक्टिव तू ठीक हो गया कैरेक्टर में एक्टिव हो जाता हूँ। ये देखो ये these are the profiles। यार मैं मैं तुमसे ये बोल रहा मेरा बिना बड़े ऐसे डॉक्टर करते करते तो बहुत कोई चाउमीन के लिए मैं पैंट नहीं धोना है इससे नहीं हो जाएगा। इसके लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तुम किसने का ऑपरेशन भाई साहब दरअसल एक चॉपस्टिक भी अंदर नहीं है। जोश में देखो एक तो ये एक ये हाँ दूसरी मैंने जोश में ना मस्त लगी थी नूडल्स चॉपस्टिक खा गए वो मैं सूप से कंफ्यूज कर गया यार इतना तो प्लीज यार इतना तो सुशरू नंबर 2 यार इतना तो टैक्सी फ्लाइट में मिल जाता है 300 का मिल जाता है कोई ऐसा नहीं पलट ना मिल जाता है ये नहीं करता यार कुछ बहुत मोटे पैसे वाली गेम बताओ तेरी खुद की दो है वैष्णो देवी जाना दिल्ली को लेके जाना तो बच्चे क्या तो ये बात दूसरे को हो सकती है एक तो बॉडी से लाते हो मेरी बॉडी की क्यों ला रहे हो आप यार तुम नहीं कर उल्टी आ रही इसकी तो आंखें दे देना ये देख सकते हो क्यों लग रहा है भाई साहब वो टैक्सी वैक्सी का घर बाहर है ना तो गलत जगह चले जाए खर्चा है तो सेफ्टी है घबराने की बात नहीं है आपको प्लीज घबराने की बात नहीं है सुशरू नंबर 1 घबराने की बात नहीं है अभी सब सॉल्व कर लो ये तो इसकी पूजा करके मैं करता हूँ फिर अंदर वगैरह से और फिर लोग ऊपर चले जाओ What we'll do is we'll take a pause, go back to the program, and we'll come back and do some more games and short form improvisation. Thank you. The Aagaaz fundraiser. It's about fun, but it's also trying to raise money for those children who do not have the means to be exposed to what the arts can be. So please remember, by the 22nd of April, we're aiming to raise 40 lakhs with the Aagaaz Theatre Trust, of course. What you can do is, of course, go to the Give India fundraiser, or you could log on to Raise a Pay. What's up next? The artwork for Bhagi Lakhiyan. The play explores the actors' gendered bodies and their relationship with the self, others, and public spaces. The piece uses objects, physical theatre, and cartography to devise a thought-provoking experience. These stories that begin on a random day are first-hand retellings of day-to-day in Nizamuddin Basti. The spectator is invited to enter the performer's world through everydayness of the narrative. The stories begin to twist into tales of how gender and sexuality plays out in the lives of the four actors. Conversations about family, trust, consent, personal space, and gender dynamics begin to surface. Their questions and confusions about their identity and how they are perceived within the boundaries of their home and their community come forth through their words and actions. The play attempts to highlight a contrast between the confining yet comfortable quality of the home space and the liberating aspects of the outside world. The differences between who I am and who people see me as guide the explorations that the performers embark on. The audience is invited to experience the happenings through a gender-sensitive lens. And this, ladies and gentlemen, is the artwork for Bhagi Lakhiyan.
And now, ladies and gentlemen, what Uncle Murphy did not let us do earlier, we are hoping he will allow us to do now. That technical glitch has finally been resolved, and Amartya Ghosh's wonderful, thought-provoking music is ready to make you luxuriate the waves of melody that he will create. Ladies and gentlemen, Amartya Ghosh. Each boy will try and I'm the sad one. All the pretty girls take pity on me. They talk of all the pretty boys with a few more charms than me. They come over as I serenade. They leave for boys with pedigree. And they tell me it's over now. Get over it. Inform me. The verdict's out on your insanity. You're the mean one. You built me a house that got swallowed by the sea. And all our pictures, they float in the ocean like fading memories. And you tell me it's over now. Get over it. Inform me. The verdict's out. We were never meant. You tell me it's over now. Get over it. Inform me. The verdict's out. We were never meant. You tell me it's over now. Get over it. Inform me. The
We were never meant to be. Little spider fights the water in the cold and damp. I lay wasting in my cave from all the blood and sand. By the light that pierces through a sky of leaves I see. For the sixth time, for the last time, falling just like me. Counting bruises isn't helping. And counting ghosts won't make you tall. Standing at the bottom of an hourglass, I know I'll last as I break these walls. Let no other night be squandered, waiting for a dream. 100 nights have led me to the light that I have seen. Little spider spins a wonder, spreads across the walls. 7 chances, spider dances on his web so tall. All my fears have now been weakened, and ghosts lay buried in the sands. Standing at the bottom of an hourglass, I know I last as I break these walls.
Guys, please stand up with your first closure. The Aagaaz Theatre Trust fundraiser, ladies and gentlemen. If you've been seeing, we don't really know what you're seeing because I'm in front of the camera. But if you're seeing what you're seeing, it's called a fundraiser. The D comes later when I tell you what the funds are going to be about. They're going to be about young children learning about art so that they can hold democratic dialogue, they can understand its need and they can appreciate its beauty. What we're looking for is 40 lakhs by the 22nd of April. Every drop in that ocean of hope helps. All you need to do is log on to the Give India fundraiser or log on to Razorpay and as they say in official circles, do the needful. That's important. Amartya Ghosh and the beautiful, lovely, simple melodies that show us how elegant simplicity can be. Just a guitar and vocal chords. Beautiful, beautiful music coming your way on the Aagaaz fundraiser. What's up next? A band that I've been a fan of for a very long time and very glad that Subhadra is here. The Yellow Bucket, ladies and gentlemen. According to this, Subhadra, you are an electro-acoustic trio that enjoys experimenting with lingering melodies. I can testify to the lingering fact because those melodies linger in my head. You also incorporate haunting harmonies, I'm told, with working towards stretching the boundaries of acoustic music. Now, how long have these boundaries been stretched since the last time I mentioned? Oh God, I think a lot of this was the idea when we started the band because we were a duo when we started. That's right. And at that time we would just play the acoustic guitar and then I would play, we would play the acoustic guitar and I would play the synth bass. Yeah. So it wasn't acoustic, it wasn't electric, so then that's why. The boundaries have kind of closed in a little bit over the past 2 years actually. With lockdown and everything that's happened in the past 2 years, but it's just been a lot of internal. But your music flows so beautifully from the both of you. I remember having interviewed the both of you with your music. It's just such nice, lovely music that stays with you, like just like a smile on the face, which is just so beautiful. But your music also tends to want to mean something, isn't it? And in this current scenario, music does need to mean a little more. Yeah, I think that's another thing that happened during the past 2 years where the writing, where it's coming from changed a little bit. और the focus कि मतलब ये audience के लिए लिखा जा रहा है जितना भी कम था पर जितना भी था वो बिल्कुल ही चला गया जितना भी था कि हम दूसरों के लिए गाना लिख रहे हैं वो तो मतलब out of the park हो गया Lonely process. हाँ अब और हो गया it's more internal, it's become a little more about what am I really trying to say with this music and I think we've really gone like internal about it. But that's an exploration in itself. Yeah, absolutely, and it's been wonderful. It's not a complaint. It's like, it's the best way, and we actually like because Ritik and I were still able to make some music together. And Surya is the person who's also like the third part of the band. उसको भी नहीं पता है कि इतना internal होगा कि उसको भी नहीं पता क्या होगा. That's this time has forced us to sort of look inward, but looking inward has created some beauty. Don't take my word for it actually, just listen to what Yellow Bucket has done with this lovely set of pieces that they've done for the Aagaaz fundraiser, which is what you're watching. And what we're looking for is to raise 40 lakh rupees by the 22nd of April. If you want to help, Give India fundraisers where you go. Also, you could log on to Razorpay and see how you can help. As I said, every drop counts. So please, if you can, that'd be great. But what you do is turn that control just a little bit further up to listen to Yellow Bucket because then it sounds so much nicer. This is Yellow Bucket, ladies and gentlemen, on the Aagaaz fundraiser. Will we ever know all there is to know about these stories tucked away? Unspoken, untold, these secrets never change. They
ground. The falling leaves they burn to the ground. Finding shades of you in a drop of your sorrow. Words and endless tunes that you take to borrow. Sticks and stones they glue your broken hollow. Scars unfold the view, and you wait for tomorrow. Frozen within time, your eyes they still smile away. I find you in me now through these things that you said. You take all your time, you take all
This is for a cause. And the Yellow Bucket performs at the Aagaaz fundraiser. This is where we are attempting to raise 40 lakh rupees by the 22nd of April so that those with lesser means can appreciate what art is, can understand the importance of a democratic dialogue, and can make choices based on what they've learned. Spaces to be created on those, that's the idea. If you want to help, all you need to do is log on to the Give India fundraiser or Razorpay, and voila, your drop in the ocean shall be appreciated. There's also Shut Up and Dance on the 16th with 2 surprise acts at KHULI. If you want to know more, there's of course the link is down in the comment section, so you can click and buy tickets. There's going to be 2 surprise acts there as well. So there's who says causes can't be fun to do? Which we're going to try and do here. That was the Yellow Bucket, ladies and gentlemen. The absolutely wonderful Ritwik, Subhadra, and Suyash creating music that you can hopefully take back with you, along with a smile on the face. What's next? Reela, the artwork for Reela. Reela is an adaptation of Andrea's Fluranic. I always get that wrong. Andrea's Fluranic's award-winning play, I Want a Country. A crisis in a nameless country brings about a demand for change. A group of young rebels seek to chart out a course for a new country, a new identity, fresh values, a space to feel safe within. They argue and fight, they mock and educate each other, they reveal their dreams, fears, and secrets. Their quest to define a new world is a voyage into some great unknown, to a place they can only imagine and covering a distance they cannot fully conceive. It is also a leap of faith for them and for us. At the very least, they will arrive to tell the tale. And this is the artwork for Reela. Absolutely wonderful Taba Chake. If you haven't experienced his music already, this is a good time to start because the wonderful melodies that he sings in Hindi, his native Nishi, because he's from this little town called Doimuk in Arunachal, and of course in English, are absolutely fabulous. These are melodies that put their arms around your shoulders, ask you to sit back and breathe a little, because that's important, you know, life and breath. Take a deep breath, get ready for the wonderful Taba Chake bringing his music for your ears only, right here on the Aagaaz fundraiser. And I welcome you all at Aagaaz fundraising concert. Thank you for being here and giving your time. I'll be singing a few songs for you guys, and the first song is in my native language, which is Nishi, and the song talks about my journey, and no matter how big the obstacle you get in life, you just have to keep moving. So the song talks about that. So yeah. Ngosiaring yoku garkun Hugulo soching mau Ni malangka de to Alebo ijing au ge mau Ngosiaring yoku garkun Hugulo soching mau Ni malangka de to Alebo ijing on gema Hub ngo Mang de khu do ma Hub ngo Mementos Mo ching maru kuritarin Ching masang chaso ko topa Ane abu ko lubing namsam Si jemang patuna Sangaja ajik tungrup nulam Sangaja ngulang sonam ngarnam ham Sang jasu aramu guling makam Atu dutuka Hab ngo Mang de khu gu to ma Hab ngo
Lokim up jakang rikardun Chingmango hugo mi kardun Ride ride kam yik tuling mato Ngag hang ale mato Hammo 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 Mangdu hugo doma Hammo 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 Mangdu hugo doma Hammo 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 Badminton शायद मैं ही हूँ शायद मैं नहीं हुआ क्या न जाना जाने ये रास्ते ले जाते हैं कहाँ पता ना यूं ही बस चल पड़ा मुझको कुछ भी खबर नहीं मैं हूँ एक मुसाफिर हम सफर भी नहीं इनमें भी मैं ही हूँ इनमें भी मैं नहीं मुझे ये है हुआ क्या कुछ पता ही नहीं शीशे की राह पे चल के ढूंढे अब मंजिल हम गिर पड़े जो तो गिरने दो हौसले टूटे नहीं जिंदगी आसा होती है कहाँ ये फासले जो दरमिया दूरिया ये दूरिया जिंदगी आसा होती है कहाँ यारों ये कैसी है आखिर मजबूरियां इनमें भी मैं ही हूँ इनमें भी मैं नहीं मुझे ये है हुआ क्या कुछ पता ही नहीं शीशे की राह पे चल के ढूंढे अब मंजिल हम गिर पड़े जो तो गिरने दो हौसले टूटे नहीं हौसले टूटे नहीं हौसले टूटे नहीं So, the last song, I know this is the last song actually. So,
So this song talks about if you like to travel, and if you want to go to mountains like that and trekking, so this song talks about that. The song is called Innovative Man. ठहरा सा मैं हूँ यहाँ बादलों से कहीं ऊपर मैं खड़ा नजारे आंखों के रास्ते दिल में उतरे तेरी ये दिलकश अदाएं आसमां से रहमत बरसाए हवाएं ये गीत गाए कहानी कोई सुना है झरनों में सुर है नदियों के पानी मुस्कुराए आजा साथ हम चले इनमें बहके में आओ इनके होके अब हम ले जाओ इन वादियों में आओ इनके होके अब हम ले जाओ इन वादियों में आओ इनके होके अब हम रह जाए The Aagaaz fundraiser, ladies and gentlemen, that's the absolutely wonderful all the way from Arunachal Pradesh. Yeah, the weather's bad there, but the music uniformly good, I tell you. Fantastic stuff. If you like it, remember this is all for a cause. We're trying to raise 40 lakh rupees by the 22nd of April. If you want to help, every drop in that ocean of hope counts. Just log on to Give for India and raise a pay. That's where it is.
The link is there, of course. You can simply click it if you don't remember it. That's absolutely fine. But there's also some fun lined up on the 16th of April. It's called Shut Up and Dance. I remember that as a wonderful Aerosmith song, but there's a lot more on the 16th of April. I've got Rida and Mom to tell us about it. KHULI KHIRKEE is where it's at. You can buy tickets, and if you're already sort of putting your hands on your cheeks thinking, wow, they're going to tell us. So tell us about Shut Up and Dance on the 16th. It's a dance party. Mm-hmm. It's a retro party since we haven't danced together in 3 years. Yeah, that could be a very long time to not move feet, though. Yeah. So what can people expect? How can they join the festivities, so to speak? All you have to do is buy the ticket, turn up, wear comfortable clothes or shiny clothes, and come and dance. And there'll be lots of exciting performances. We have a surprise performance to be revealed. Let's give them a while. Okay. We have this really exciting pole performance happening. We have hip hop happening. We have food stalls. We have face painting, glow in the dark stuff. You can also turn it into a masquerade if you wish. Yeah. Anything you wish, as long as the clothes are on, that's important. 8:30 p.m. to 1:30 a.m. Dance all you can. And where's the tickets available in case people want? It's going to be on the link on Aagaaz's handle. The payment goes to Razor again. And there's a little Google form where you will fill in all the details so we know who's coming. Excellent. And that's it. Excellent. So that's what it is. 16th of April. You know what to do, right? Face painting, glow in the dark, masquerade, poles. Oh my God! Can you hold yourselves back? I hope not. Just go buy the tickets. Thank you very much for that, Mona. And you remember the Playground Collective? Yeah, they're ready to bring some of that improv back on the Aagaaz fundraiser. Are the guys ready? Here they are. Alright, जो भी अभी अगर आपने पिछली बार देखा है और अभी जो लोग रूम में भी आए हैं, we're doing some improv, theater and comedy. What we are doing is we are trying to make up scenes on the spot based on your suggestions, right? So we'll continue our show and alright, so you guys know the drill now, alright? What we'll do is we'll take some suggestions from you and we'll start something and we'll pause that in between and we'll add something. Alright, are you guys with me? Yeah. Great, great. So, alright, how about, give me a proverb. Kuch proverb, muhara, kuch bhi, some saying. Nako chale chamana. Nako chale chamana. Alright, that is one. What else? Naach na jaane aangan tera. What else? Give me 2-3 options. बंजर क्या जाने अदरक का स्वाद. So why don't you लोहे के चने चबाना. लोहे के चने चबाना. All right, now I want someone. All right, please, why don't you pick one of these 4? मुकद्दर का सिकंदर. All right, sir, why don't you pick one of these 5? The last one. All right, can you repeat? नाच मुकद्दर अदरक का जाने. When you get नाच का जाने आने. all right, let's go with नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. All right, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा is our one suggestion, right? Now I need another suggestion, and this suggestion is for an emotion. Give me a strong emotion. Vibhats, guilt, rage, gluttony. All right, let's pick one. All right, let's go with guilt. All right, naach na jaane aangan teda, and guilt is our suggestion, right? Now let's see what starts, and we'll freeze them, pause them, and add something. All right, naach na jaane aangan teda and guilt. 3, 2, 1, enjoy. ले जाना.
ठेकेदार है, उसके साथ काम नहीं करना मुझे। मैं अकेला काम नहीं करूँगा, उसके बाद आवड़ा आएगी। उसके बाद इसके बाद केला खा रहे हो? लंच टाइम ये जो इसके एफिशिएंट के एक दूसरे के घंटे लग रहे हैं तो टमाटर की खाना तो दे दो, पैसा नहीं दे तो 2 रोटी है क्या ले क्या दे क्या रहा है इसमें उन्हें तो पूरा दे रहे हो। मैं अपने घर से लाया हूँ। हाँ ठीक है ना, मेरी बीवी बनाती है। इसके बाद खाना भी नहीं है, ये सबसे ज्यादा बोलता है, काम सबसे ज्यादा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सुपरवाइजर बनेगा सुपरवाइजर नहीं बनना है। कौन है सुपरवाइजर आपको है क्या बोलिए सब यही कह के सब कर लेते हो, मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ यहाँ पे। कल 4 घंटे सोया, मैंने नोट किया। शिफ्ट के बाद सोया हूँ मालिक, शिफ्ट के बाद सोया हूँ मैं। शिफ्ट के बाद सोया हूँ, हाँ जी, शिफ्ट के बीच में लंच ब्रेक लिए 4 बार कल इसमें, अभी तीसरा चल रहा है हमारा। इससे भी तो शिफ्ट की टाइमिंग पूछ लो। 8 से 8 9 से 5 होती है, 8 से 8। ये कौन सा बड़ा अफसर है, मेरे को 8 बजे से बोल रखा है। ये बताना जरूरी था इसको मैं 9 से 5 होती करा रहा था इससे 8 से 8 सबको इनको 9 से 5 करा के आप खाना भी आपको मेरा दिया देखो यार, सूख नहीं रहा है। साइड पे चल गया सर मैं कहता हूँ उसको निकाल दो, ये फूट डाल रहा है, यूनियन में फूट डाल रहा है, इसको नेता बनना। अच्छा मैं घर जा रहा हूँ, मैं तो मोटरसाइकिल आया हूँ आज और मर्जी चला। चलो भाई ये क्या है तो अलग मेरे साथ तो रहता है मैं बता रहा हूँ ये सही नहीं हो रहा, आप तो चुप रहेगा, आप में कोई डिसीजन लेने की बात नहीं है, मैंने देखी है, बता नहीं पड़ा मैं, आप में कुछ नहीं है, आप इसको होगा कैसा होगा बिल्कुल होगा, सही बात है। ये आपकी कुर्सी पे कैसे बैठा है? मेरा डिसीजन है कि मैं आगे चलूंगा डिसीजन लेके काम सब समझ रहा हूँ क्या चल रहा है, सब समझ रहा हूँ, तुम्हारी 60-8 में सब समझ रहा हूँ। हाँ मैं बता दूंगा कैसी हो शिफ्ट खत्म हो गई है तो आप भी मेरे पास ये सर हमारे खोपड़िया ने पैसा दे रहे हैं आप कह रहे हैं अब भेज रहे गाँव भेजेंगे अच्छा हाँ बिल्कुल 2 महीने तो मैंने दिया था तुमने तो एक्स्ट्रा काम करा तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा भी मिला भाई मैं वो तो मटेरियल का था ना, बजरी आ गई उससे तो बजरी आ गई, पूरा एक कर उसको दिया क्या सारा नहीं दिया अभी तो कहा जितना दिया दे दो, वो 2 तो भेजेगा तुम उसे 1 देना मेरा पेटीएम में भी भेज सकते हो सर, कोड है मेरे पास ये चल रहा है यहाँ पे किसी को नहीं पता क्या हो रहा है उसको पेटीएम कहाँ कैश में दे दो। नहीं मेरे को गाँव भेजना है, पेटीएम कैसे भेजूं को बात निकल नहीं आते बहुत ज्यादा बदतमीजी हो गई है, मैं आप यहाँ एक सेकंड में आना ही नहीं आता। 1 सेकंड रुक जाओ पहले तुमने गड्ढे भरे हैं ना एक दूसरे के उन्हें खाली करो लंच टाइम होगा किसी को पैसा नहीं मिलेगा अपना जितना ये देखो ये यही करता है, ये यही करता है पूरे टाइम, जैसे ही आप काम का बोलते हो ना, जैसे इसको दिखाना होता है ये इधर से उधर भागता है, क्योंकि इसने क्या रखा है, ये हमेशा यही बोलता है कि जब भी मालिक आए ना इधर से उधर भागो, उनको लगेगा काम चल रहा है। ये अच्छा बेटा, मैं आपको आपको लगा देखो ये सेम कुर्सी है बीच में इधर रखी थी, ये वही कुर्सी है जो इसने इधर से लेके गया था। सर मैं बहुत काम करता हूँ, मुझे खेलते भी नहीं लगता, मैं बहुत काम करता हूँ। बाथरूम में नजर आ गया, टेढ़ा कर गया बाथरूम सारी इसने किया है, क्योंकि आपको भट आ गया, इसने का भटे के ऊपर बना दो, पूरा टेढ़ा बन गया। मेरे से ये सीधी लगाना यार, फिर सीमेंट डालना, तो इसमें का भटा हटा के भटा हटाने के लिए लेबर वाला मैं इसके ऊपर बना दो, ये तो सीख खोद लो। सर मैं बात है तो सीख गया, बस अब ये रोदेगा, आप उसको पैसा दे दोगे, क्योंकि आपको पता है इसके बच्चे हमारे बच्चे नहीं, तो पैसा नहीं मिलेगा हमको। चलो आप मीटिंग में जा रहे हो, क्या दिक्कत है? All right. You guys enjoying what you are seeing? All right, great. What we do is we add something to this scene. All right. What I need is, if anyone is comfortable over there, I need a phone.
right? And what we'll do is we'll open up WhatsApp and read some chats. Yeah. Right. So, is there a loner? We have a similar looking person from the stage. But this might look like it's staged. So if there's someone else's phone. Anyone? Anyone? Alright, we have one phone. A big round of applause for her. Okay, who wants it? Alright, it's alright, so now this character can only say whatever is there in these chats and nothing else. Alright, nothing else. Alright, and this chair over here, right, will add emotional cheers. Alright, जो गिल्ड है वो है, जो बाकी लोग इमोशन फील कर रहे हैं, जो भी इंसान इस चेयर पे बैठेगा वो पर्टिकुलर इमोशन फील करेगा उस समय में. Name that emotion. ये सरप्राइज गेम चल रहा है. गेम. Alright, let's go to disgust and surprise. Disgust and surprise and some confusion. Alright, so two emotions and WhatsApp. Go ahead, we'll continue this thing. 3, 2, 1, go. Okay, मेरे पास एक तकनीक You left. आपकी सभी बाजी अपनी अपनी पास जमा करा दे. पेमेंट करनी है आप. आगे मुझे सब देखकर हाँ जी मुझे पसंद ही नहीं. सबले में सारा ले जाओ. जैसे आपने बहुत क्या दुआ में नमाज बात करो. अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ. कैसे चलेगा अल्लाह का नाम देखा मैं कितना ईमानदार. दीदी तेरा बहुत मजा आएगा देख के. अल्लाह को जान की बातें लगा के रोजा नहीं चाहिए. Okay, we'll keep the phone for the next game. Alright, this game is called 4 Ways to Die in Hell. Alright, so these guys are already in hell. Right? Let's imagine that hell is another world and let's find the location inside hell. Give me suggestion for a particular time. Shauchalaya. Alright, Shauchalaya. Let's go to Shauchalaya. Alright, is it a public washroom, private washroom? What kind of washroom is this? Where is this washroom placed? Boys hostel. Boys hostel. Salon. Alright, salon. Let's go to that. Alright, so, alright, it's a salon. Inside that there's a washroom, and all of this is in hell.
right? And there are 4 characters in hell, all right, inside that washroom. Now, give me 4 ways to die. Constipation. Constipation. 1. What else? Drowning in the pot. Drowning. No, not particularly where and how. Like constipation is a way. So from water. Let's go with water. All right. पानी से मर गया डूब के कैसे? Let's figure that out. ठीक है तो पानी. Constipation. Spiritual awakening. Shock. Electric shock or shocked by emotional shock. Let's go with shock. Let's figure that out. Alright, shock, constipation, and water. Badbu. Let's go with a very traditional one. Because these 3 are not very traditional. So let's go with one which is heart attack. Alright. Heart attack, constipation. What are the 2 others? Shock, drowning. Just water. These are the 4 ways. They are in hell. This character can still only say WhatsApp. This character will only say whatever is there in WhatsApp. Right? We change that. Alright. They'll enter. And yeah, that's it. Alright. Got it? You want repetition of the 4 ways? Alright. 3. You guys ready? Yeah! Alright. 3, 2, 1, draw. भाई साहब ये तो ठीक है बाल कटवाओगे कोई बात नहीं ये रोज का है बताओ कैसे काट आजकल यमराज वाला स्टाइल बड़ा सही चल रहा है काट दो उसके बाद बड़े नहीं होते सवाल पूछ सोच रहा हूँ आपसे बात नहीं करना फिर तो काट देता आपके पास वो है कायम चूर्ण वो होगा ये पतंजलि वाला वो भी बगल में आएगा कौन हंस रहा है रात दे दूंगा बेटा अब मेरे अजीब को जैसे बारे में हाँ मतलब देखा तो अभी उनसे कोई नहीं पर हेलो में तो लगता चल जाएगा पढ़ने के बाद सब बैठ जाओ मेरा चला हो गया ये अपना अपने साथ है मतलब बिल्कुल लगा चाहिए बिल्कुल ये आपके में ये ऐसे सर ऊपर तो गदा मत करो कि मेरी गर्दन के लिए आप कहाँ जाओगे मुझे नहीं ठीक है भाई साहब करियर खत्म कर रहा हूँ जानबूझ ओहो ऐसे बोलो ना अरे सीधा यहाँ से बैठते हैं इधर ओहो बढ़िया बढ़िया बात आपने देखा है जी देखा मैं जरूर देखा हूँ 4 and 3 2 इसकी आवाज ऐसा बात है तो अटक बोले ले रही है वो आग लगी है उसमें सही लगा हैं असिस्टेंट है तुम यहाँ पे बैठ गया चलो ये है नहीं हेलो अर्जुन कपूर जैसा दिखना है थैंक्स और किसी में बात नहीं करते लिस्ट वॉइस इसका कह रहा हूँ अबे यार चुप रहना बात नहीं करनी इसके बाद
Okay. Such a life. धरती में भी मतलब मुझे कहता लोगों ने पत्थर मार के मार दिया क्या बोल रहे क्या था मैंने मतलब मेरे लोग का लाइक कब तक जाओगे? पहुंच जाएंगे यार कभी ना कभी हमारी पिक्चर में देखेंगे लोग ओके। आप एक्टिंग करते हो मैं एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैंने अपने लिए लो हैंगिंग फ्रूट चूज किया है अर्जुन का ओह फिर आप भी कर सकते हो इनके बाद हेलो मेरे बैल मांग रही थी और बोलो मैडम और बोलो मैडम से क्या मेरे टांगे में किसी ने आग लगा दी पूजा में जा रहा हूँ पानी जाएगा सैंपलिंग ठीक है वैसे पानी एक पानी आप क्यों रखा मैंने अभी नहीं स्प्रे किया मेरे पे पानी लगना चाहिए वरना कुछ नहीं उफ आप ठीक तो हैं आप ठीक तो हैं राबिया रंडी ये पानी पानी कैसे चुका को मैंने आपने महंगा वाला स्प्रे किया पानी यहाँ पे आ गया किसी को भी करंट लग सकता है गजब यार गजब मैं लाइट से लगा के देखता हूँ कि पानी का अंदर कैसे होगा पानी यहाँ पे आ गया मेरा करियर खत्म तो हर मैं खत्म हो जाऊंगा नहीं कुछ नहीं हुआ पढ़ दो Freeze or exchange the person with the phone. Alright. Sorry. 3, 2, 1, continue. हाँ सर चला दो क्या हाँ चला दो मेरा रहेगा तो आपको गलत लग जाएगा स्पॉट दे दो हाँ चला दो चला दो ऑन कर फुल कर दो उसको हाँ मैं इसको चेक करता हूँ ये कैसे हो रहा है कुछ नहीं हुआ इसको ये हार्ट अटैक से मरा यार हार्ट अटैक से मरा धरती में डॉक्टर था नहीं तू इतना चिपकी थी उससे इसको पानी का हुआ पानी से लगाए आई नो ये लेकिन पता कैसे लगाएगी किसे हाँ अच्छा मेरे को बस एक सिंपल बात पूछनी है क्योंकि ये हम थोड़ा इलीगल काम है आपने बुकमाई शो का रजिस्टर किया था उदास हो गए नहीं मतलब मैं खुशी पूछा आपने बुकमाई शो का रजिस्टर किया था नहीं बोला क्या नहीं तो आपने हाँ भी नहीं बोला ना आपने बुकमाई शो आपके पास कोई कूपन कोड है कि आप खेल के टॉयलेट में आके यहाँ पे कटिंग करवा आपने पेमेंट की है अभी तक तुम कौन हो मैं अच्छा हूँ मैं काटता हूँ यहाँ पे बाल और ये जो आपको पूरा डिजाइन दिख रहा है ना ये टॉयलेट का जो रिफर्बिश करके इसका बनाया है ये मैंने बनाया है फिर करो तुम है ना मैं करता हूँ आपको कैसी हेयर स्टाइल चाहिए बेसिकली मैं जैसे आपको चाहिए मैं वैसे ही बना सकता हूँ फॉलो करो तक ही दिखेगा ओके मैं अपने हिसाब से कर दूंगा आपका कुछ पेन से काट पेन से पहले ड्रॉ कर लेते हैं देन वी पे लेट्स डू दैट आई एम रियली सॉरी मैं बहुत ज्यादा एंग्शियस भी रहने लगा हूं आजकल तो हो जाता है यही तो हां ये यहाँ ठीक है यहाँ पे I got a new job. Congratulations. मैं डॉक्टर हूँ मैं बताऊंगा ये कैसे बात है ये पानी से मरा मुझे बता सकते हैं आई थिंक यू शुड कॉल एम्बुलेंस नहीं जा रहा है तुमने इसमें पानी मिला सर मैंने आपको मना किया था पानी से आप से करेंगे Let's remove the phone. Let's remove the phone. All right. And we use the tool we were using in the first game. Just raise your hands and anyone can give a go. All right, go. सर आप क्या जल्दी ले जाते हैं यहाँ से जो बनेंगे वापस
सही बात है, लेकिन आपका तकिया आपका तकिया बड़ा अच्छा है। मैं सोच रहा था तुम कल उससे मेरे को बहुत स्मेल आ रही है आजकल अपने तकिए में। जब भी मैं सोने जाता हूँ ना मेरे को लगता है कि ये मेरी खुशबू नहीं है। उसके पीछे कहानी है सर। क्या कहानी है? क्या अच्छा ठीक है। क्या हुआ था? ये तुम जिस तरीके से रोते हो ना, मेरी माँ एक बात बोलती थी कि बिल्लियों को प्यार से रखना चाहिए। मैंने नहीं रखा और तुम हो गए मेरे पास। यही होता है। लेकिन मैं कह रहा था सर कि रग्बी खेले बहुत समय हो गया। एक सेकंड, आप मुझे थोड़ा रूल समझाओ। उनको ना लेके चांदी चौक जाना है लेके। यहाँ से सीधा चांदी चौक जाना है बोले। वो वही है ना पहला। लेके सीधा वहाँ तक। सीधा, और आप मुझे बीच में रोकोगे कुछ करोगे? नहीं, अगर आप अच्छा आप नहीं रोकोगे। मैं अगर किसी से टकराता हूँ तो रेंगना चालू कर दूंगा। आपकी मर्जी। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि donkey, you call me donkey. Just be भागना, you get donkey, I get Aahvaan. Okay? donkey फिर से मैं रेडी नहीं। तो मैं donkey बोलता हूँ। हाँ, एक सेकंड आप आगाज आवाज करो। आप क्या बैठ खेल रहे हो? ऑडियंस के बिना मजा नहीं आएगा। तो मुझे एक नाम बहुत छोटा सा बस मुझे कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि वो फिर हमको लिखना पड़ता है ना कि दुकान में कौन कैसे मरा अगर मरता है तो। आप एक बार मुझे बता दो कौन के वजूद के बाद क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? देखो मैं धरती में डॉक्टर था लेकिन मेरा वर्चस्व जो है वो इंटैक्ट सा दिखता है। मुझे भी कभी समझ नहीं आता कि मैं बॉस हूँ कि आप बॉस हो। आप बॉस हो। आप मैं बैठता हूँ। आप मुझे सिर्फ तुम इतना बताओ कि वो जो पहला बंदा मरा है वो कैसे मरा था? पहला बंदा मरा है बुलबुले खाने से। तो उसने बुलबुले खाए, उसके शरीर की छींटे थी। डेथ वाटर, ओके। और जो में से परमेश मारा बाहर वो मारे पड़ गया। कैसे मर गया वो मरे हैं हाथी चल गया सर। मैं आग वाले हाथी चल गए। मैं पुलिस से हूँ। परमेश कौन है? मैं बताता हूँ धर्मेश तो भाई थे। धरती में काम करते। एक बार उन्होंने जमीन के पैसे अगर तुमने फालतू बोला ना वही हाल होगा। मैं फालतू नहीं बोला, मैं बस आपको हिसाब दे देता हूँ। मैं आपको हिसाब दे देता हूँ। सबसे मैं नहीं था यहाँ पे, ठीक है? मैंने ये मेरा ही है वैसे, पर मैं यहाँ पे था नहीं। मैं अपने बंदे को लगा के गया था। उसने ऐसा आया सर, पहला बंदा उसने उसे पानी से मार दिया। वो सब का खुद अभी हार्ट अटैक का नाटक अभी देखना झटके आएगा वापस। मेरा तुमने टट्टी वाली सीट क्यों लगा दिया? लोग कंफर्टेबल होते हैं बाद में निर्वाणा में जाते हैं फिर छुट्टी आ जाती है। सर मैं क्या करूँगा? मैं तो वैसे ही कॉन्स्टिपेशन करता है। एक बार सर हो नहीं पाएगा क्योंकि लड्डू और कॉफी मैंने आज खाई नहीं। लड्डू और कॉफी खाना होगा। मेरा जब पैसा लड्डू पे ले लो। और ये ला कॉफी। मैं आपको बोला रहा हूँ ये आदमी फ्रॉड है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि फ्रॉड है। मतलब मैं जब नौकरी पर रखा तब नहीं पता था, बट रिसेंटली पता पड़ा। वो मेरी रात में आए हो। हेलो तो क्या करना है? सर बैठता हूँ तो और ज्यादा फील होता है सर मुझे कॉन्स्टिपेशन। ऐसा तो मैं नहीं। अब मैं बॉस हूँ। तो आप कान के पास थोड़ा बर्गर बोलो मुझे। बर्गर बोलते रहो।
Just keep repeating burger. Burger बोलो ना. मैं बहुत ज़्यादा हो रहा है. आप burger बोलते रहो. सर आप पति हो क्या किसी के? जनरली पति लोग सुनते नहीं है ना. आप बर्गर बोलिए ना. बहुत जोर से. आपको पता नहीं है. Do you want more, right? Yeah. Okay. Great. What we'll do is, alright, I want two people on stage. Alright. This game is called alphabets, right? It's a simple game. Two people can talk in the alphabetical order. Alright. We'll show you an example how. भाई आराम से. चल ठीक है भाई. देखो मत. एक बार Free. Alright, so you get an idea. Every sentence has to start in that order. Alright. If you make a mistake, you have to yell die. What do you have to yell? Die. Right? It's a violent kind of show. So yeah, if you make a mistake, you have to yell die. One person will go off stage and another character will come in. Right? And they have to do the conversation in that order. Understood? Yeah. Now give me a location where there are a lot of people coming in and going out. Rishikesh. Alright, location, Rishikesh, but hill station. International Space Station. International Space Station. Yeah, a lot of people coming in and going out there. Let's do that. Right, International Space Station. Alright, give me one profession. Doctor. Doctor, we already did doctor or something else. Lawyer. Alright, there's a lawyer at the International Space Station. Alright, give me an alphabet to start with. So they are DJ and international space. DJ. DJ. Alright, there's a DJ. And one of the four characters is a lawyer. DJ and lawyer, International Space Station. And I need an alphabet to start with. Q. Right, we start with Q. Yeah, we start with Q. Q, International Space Station. You have to yell die when they make a mistake. So remember the order. Right, if we keep going round and round. Alright, 3, 2, 1, go! Queensland send notice आया है. Right. साफ है अक्षर का. पढ़ो. तुमने बिजली का बिल नहीं हो. ऊपर बहुत अच्छा है. वाह. साइलोफोन है. Next, I bring a party. Then I भूल गया. Die. It was correct, but die. जाकिर भाई. कहाँ से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ. आ जाओ. चलो इस बार इस साइलोफोन मिला है. ड्रम मिला. एक बार में क्यों नहीं बोलते आप लोग? फालतू में बोलो. मुझसे पहले बोलो. पहले कौन बोलते हैं? गलती हुई सर. तो प्रोड्यूसर को पहले बताना चाहिए ना क्या लाना है स्पेस स्टेशन की पार्टी में. Oh my God. और क्यों नहीं लोग? मैं गजल समझ के आ गया था. वही मैं गजल नहीं पता. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपने बुलाया है और मेरे को बोला था कि जाइलोफोन लाना है. ड्रम की बात नहीं कर रहा हूँ. तो भी तुम्हारा नाम है स्कूलों के बाद. जाकिर.
करण नाम से गाय Left my wallet here. मुझे मिला था ये मैं आया तो अभी ऐसे ऐसे करूँ फिर आदत हो जाए Oh! Oranges. क्या से पूछा तो बता देता हूँ कि मैं ऑरेंजेस भी नहीं लाया क्यों? कुछ भी क्यों लाया? कैसे पार्टी कंप्लीट करेंगे? अजय? रास्ते में वापस आ रहा हूँ मेरा नाम करा है सही तो बोला था शो को चालू. मेरी एक्टिंग मत करो बॉस आएंगे पकड़ लेंगे सबको उम्दा बात करते हो आप करे क्या कंसोल तो सब गड़बड़ हो गया भैया आइसक्रीम खाएं ब्रांड नया ब्रांड खुलाया आईएसएस एक्स वाला बाड़ा है मेरा फुल क्रॉस बाय हो रहा चलो लगा के देख लो है अभी देख लो अभी टेस्ट कर लो यहीं पर ही अभी कर लो बाहर कर दो ना वो गड़बड़ की दिक्कत होती है चमन अभी कर इसको बाहर जाके नहीं समझ आएगा तेरा साथ कर रहा है एक्सक्यूज मी फिर इंग्लिश बोल रहा मेरा स्टेटस में जाएगा मेरे को किसी फॉरएवर योर्स Please, let's do one thing. Let's bring back that character. Come back. And this character has also entered. Alright? But now, this character is free to say whenever and whatever. Not according to these rules. Right? They are in the alphabetical order. Alright? And the alphabet is right now G. Let's take another G. G is the alphabet. These two characters will be talking in that order. And this character can say whatever the character wants. But whenever the character says something, like if he says what, so the next alphabet becomes after W. Alright? For them. Understood? Simple? Yeah. Not for them. 3, 2, 1, go. बोलिए शुरू होइए सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आज मैं वाली गोलियों की बात कर रहा है ऐसा स्टैंड मत करो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो सर आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है सुनाई दी थी चलिए आज मैं वाली गोली है डब्ल्यू वाला पहाड़ ढूंढ के आता भैया आपके पास एक सवाल कर रहे हैं चुरा के लाता हूं कहां से चुराए भाई दिल्ली जाके डाय कहां से स्लो सर क्या तुरंत कर दिया भैया आपको एंकर हो मेरी चमन आवन का वैसे भैया प्लीज आ जाओ एक बारी चलो Alright, it will not take much time. Pretty shorter games.
Alright. What I want is for you guys to come up with a name of a Hindi soap opera. Right? The kind of serials we see on Star Plus, Z, so on. Just make a name up. Try. Make a name. Yes. Okay, let's go with something that exists and let's try to revise that. Kasauti Zindagi. Kasauti Zindagi ki. So let's go with Kasauti. Daamad ke Daamalu. Daamad ke Daamalu. Perfect. The audience we want in every show. Alright, Daamad ke Daamalu. And let's try to rhyme this. Daamad ke Daamalu. Give me another line that rhymes with it. Somebody else. Kha Khalu. Yeah, something like that. Jungle mein kala. Daamad ke Daamalu kha gaya and let's give a character. Let's give a character, a saas gaw kind of character, right? Daamad ke Daamalu kha gaye. Sadhu. Sadhu. Just give a sadhu. Daamad ke Daamalu kha gaye sadhu. Sadhu. Alright. Daamad ke Daamalu kha gaye sadhu. Right? This is the name of the Hindi soap opera. Right? What we'll see is one scene from that soap opera. Right? That's it. That's the game. Alright, 3, 2, 1. Daamad ke Daamalu. अमित जी मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है मेरे लिए जरा दवा ले आपका चेहरा उठा हुआ नहीं लग रहा है जी कहाँ तो आजी सब कुछ ठीक है सब कुछ ठीक ही होना चाहिए Daamad. आपको मैंने कहा था कॉन्स्टिपेशन की गोली लीजिए आप गूगल दामाद जी रेशमा मर गई रेशमा मर गई तो मर गई तो कुकर में चढ़ा देती फिर बचा दी बहुत शानदार शानदार वो सामने मुझे दिखते हैं वो पड़ोसी है पड़ोसी की इस घर में दामाद से ज्यादा Up freeze and see. Alright. Let's consider this was episode number 1. Right? This is where it ended. Now I want you to take this to an episode number. Alright, give me an episode number. 86. 86. 543. 543. Alright, let's go with the alright, pick another number. Give me another. Somebody else. 300. 301. Live 20 years. 301. 301. Episode number 301. Let's consider this happening after 5, 7, whatever years. Right? Season 7, 8, episode number 301 of the same soap opera. Alright, after what this happened. Alright, 3, 2, 1, go. एक ही ख्वाहिश थी मेरी सासू माँ के हाथ के दबाव चलो 150 साल की हो गई मैं इसके आलू नहीं बने तेरी तलब नहीं बनी हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं हुई फिर तू मेरे से प्यार नहीं करता और मेरा स्कूटर भी खराब है मैंने कहा था 1 साल बाद से सही कर लाज घर में पड़ी है और कोई देखने भी नहीं आया तेरे साड़ू की वजह से हुआ है सारे घरों के दवा खा के रिश्ते खराब कर दिए उसने बाड़ुआ खानरा वो पड़ोसी है You want to see something in the middle of these 2 episodes? Let's try that. Alright. Give me a number between 1 and 301. 263 2 is interesting. Or 300. Pick 500. 300 or 2? 2. Alright, episode number 2 of this. 3, 2, 1. अब किसी को नहीं खाती अपनी खाती से बना के खुद देखो भाई हमसे तो रहा था दवादों की बड़ी इज्जत आपकी नहीं बना रही हूँ देख लो पूरी कट्टे लेके आई हूँ
Salted. Why is it not pickle? और मैं जवान में पूछ सकता हूँ। मैं भी पूछ सकती हूँ। अब ये मैंने लगा दी 5। बस आलू पक जाए, घर में आग न लगे, क्या पता? साढ़े में से तो कुछ भी हो सकता है। मतलब ससुर उतरा से कॉल लगा के गया है। जब एक ही है, आगे जो आलू खाता रहेगा। माता जी, ये आदमी को इज्जत करने। माता जी आपकी बात का उधर बहुत हंसी की बात है, क्या कर रहा है? दिल्ली आने के लिए सारा पानी मार्केट में की मार्केट से भी आप चलो ना बात चलो ये देखो आपने कैसे सबसे वो बोल रहा शानदार। Thank you so much. All right, back to you guys. Thank you so much. And that, ladies and gentlemen, is the end of the Aagaaz fundraiser. Thank you very much for being with us. Thank you very much for participating, and thank you very much for encouraging us to do what we do. Please do remember, we've reached a figure of 8,13,030. Thank God for you guys. Remember, don't stop. The aim is to get 40 lakh rupees by the 22nd of April. The Give India fundraiser and the Razor Pay link is where you go. 16th of April, of course, Sharp and Dance party is happening as well. You might want to buy the tickets. The links in the comments, and you go to the Aagaaz handles and you'll find the links there as well. Thank you very much for giving us hope, because hope right now is all we have, and you are that hope. So thank you very much for being a part of the Aagaaz fundraiser.